Namaskar. I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to our special 5-day live online program on Indian Sign Language in observance of International Sign Language Day, which is celebrated every year on 23rd of September. This day has been recognized by United Nations and organizations to raise awareness about the sign language. You are watching us live on PME Vidya channels 1 to 12, on PME Vidya ISL channel number 31 and on our YouTube handles NCERT Official and NCERT Events. आज हमारा ये डे 5 का सेशन है। आज इस जर्नी का आखिरी दिन है, लेकिन मैं आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी what all we have learned or discussed in previous 4 sessions. डे 1 पर हमने बात की थी A Pathway to Inclusion Through Everyday Communication Signs, ISL. सेकेंड डे का टॉपिक था ISL in Cognitive Development. थर्ड डे हमने बात की ISL in Pedagogy and Classroom Practices. फोर्थ डे पर हमने बात की Sports and Games in ISL Inclusion Beyond Classrooms. और आज फिफ्थ डे के सेशन में हम बात करेंगे Expression through ISL and Road ahead rather. So, इस टॉपिक पर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए, which is 8800440559. हमारा ईमेल आईडी है dth.isl31@ciet.nic.in. साथ ही साथ हमारे यूट्यूब हैंडल्स पर भी आप अपने क्वेश्चंस, सजेशंस और फीडबैक हमें भेज सकते हैं. अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी हमारे सभी पैनलिस्ट से और हमारे इंटरप्रेटर से. आप स्क्रीन पर हमारे इंटरप्रेटर भूमि को इस वक्त देख रहे हैं और उनका साथ देंगे सौरभ टर्न बाय टर्न. एंड बिहाइंड द कैमरा हमारे पास 2 इंटरप्रेटर्स रहेंगे, आशीष एंड अनुष्का. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ. और चलिए अब आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे पैनलिस्ट से. We are joined by Dr. Melissa G. Wallang. She is Associate Professor from NERIE Shillong. Ma'am, namaskar and very warm welcome to the session. Namaste. Thank you for having me. Pleasure is all ours. We are also joined by Mr. Vishwajit Nair. He is ISL Instructor from ISLRTC. Sir, namaskar and very warm welcome to the session. And we have 2 achievers with us. We have with us Miss Manu Bhardwaj. She is a karate player. Ma'am, namaskar and very warm welcome to the session. And last but not the least, we are also joined by Miss Ramandeep Kaur. She is a self-taught dancer. Namaskar and very warm welcome to you. So, my dear viewers, अब हम इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं और ये सेशन हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन के ज़रिए हम ये सीख रहे हैं किस तरीके से ISL डिफरेंट सिनेरियोज़ में हमारी हेल्प करती है और हम सभी के लिए इसे सीखना ज़रूरी है ताकि हम इंक्लूसिविटी की तरफ जा सकें, हम सोसाइटी में इक्विटी ला सकें और हम हर एक्सपीरियंस को, अपने रिलेशनशिप को और अपने बॉन्ड्स को विद डेफ कम्युनिटी और स्ट्रेंथन कर पाएँ. एक हेल्दी एक्सचेंज हो सके आइडियाज़ का, कम्युनिकेशन का, टीम वर्क हम बिल्ड कर सकें. और सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में ISL इंडियन साइन लैंग्वेज है क्या. सो डॉक्टर मेलिसा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आई हैव हर्ड दैट दिस ISL इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज एंड इट इज़ अ कंप्लीट लैंग्वेज. प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमें बताएं. हाउ? Okay. Thank you for the wonderful question. Well, when we talk about sign language in general, we call it a natural language, right? And many of the times we are confused. How can sign language be a natural language? Well, extensive research in the field of linguistics for several years. And we have seen that, you know, when we look at language, what is language? Language is a set of structures. Yes. So language is like, for an example, like a house. In every house there's rooms, and these are systematically built, you know, bit by bit, pieces together. So a language is also a system of a system of structures, and in that structure we have sounds, we have words, we have meanings, and we have sentences. Now, how is sign language a natural language? When we look at it, you know, sign language is a visual manual communication form of language.
Now, when we say visual communication, which means that sign language, instead of sounds, it has 5 phonological features: the hand shapes, location, movement, orientation of the palm, and the non-manual activity, that is the facial expression. These substitute in place of sound. When you combine these together, we get one single sign, like coffee, tea. These are not random gestures. These are not gestures, but they follow a systematic rule, a grammar behind sign language. Right. So sign language evolved naturally in a deaf community when they're like beyond the structures. How do we say it is a natural language? A deaf child born to deaf parents acquire sign language naturally from his or her parents. Just like hearing child acquires their language from their immediate environment. The same case happened amongst the deaf community having deaf parents. And more research also talks about how is this sign language, being a visual communication language, visual manual using the hands and facial expression, how is this a natural language? Extensive research also shows that when we process speech, a spoken language, our left hemisphere is used to process language. Now, when we test it in a deaf brain, the same process also takes place when a signer speaks in sign language. The left hemisphere of the brain is also used for processing language production. So many extensive research has been done in Indian Sign Language as well nowadays. And when we say a natural language, yes, they say, oh, sign language is gesture. It's just a tool. It's not. It has a grammar intact. When you have these signs also can convey meaningful communication following a systematic rule, a word order, where Indian Sign Language, most of the time we find the verb at the end. So there's a rule governing Indian Sign Language, just like any other sign language, just like spoken language. But gestures is also part of sign language as well as spoken languages. So gestures are part of our being human, we evolve in our as human. Also we acquire language. In fact, gestures are the determining factor, the precursor for language development in children. When we expose even hearing children to sign language as well, you'll find that they are more capable to acquire this spoken language as well. They're more advanced because this is based on a multimodal theory perspective of how we view language. Language is not just a system of speech alone, vocalization alone, but rather every aspect of human communication, body movements, gestures, facial expression. You can see me, I'm using a lot of gestures. These are very much part and parcel of what we call the concept of language. So most of the time we take it for granted. Language is, out there, it's available. But when you look at, when we look at sign language offers a lot of understanding of what is that human language. And if we talk about natural language, every child, the moment they go to school, they're suddenly exposed to a school language. They have a home language and school language. For a deaf child, if they have deaf parents, they have the home language as the way hearing children have as well from deaf parents. But the challenge is when deaf children are born to hearing parents and when the parents do not have a sign language background or training, they don't understand, they don't use it. So we are depriving that child of language. Language is a pathway to cognition, to development, to understanding the world around us. So sign language in that way, why we want to stress on the fact that we have to introduce sign language as early as possible so that the child do not be deprived of his individual development, his cognitive development, understanding the world, understanding what he's learning, what he's interacting with his parents, his family, his surroundings. So we can imagine, sign language is something that I have been studying for years, since the year 2000. And it made me understand that I can understand human language better because
sign language is equipped to communicate anything of the past, of the present, can have a normal discourse. You can see our interpreters signing right now also. See, they can discuss about many things, just like when we are talking about in terms of spoken language. We can use words, different varieties of words. We follow very systematically. You can see our interpreters signing because they are following a grammar that is ruling behind the system, the linguistic system. So this is it for now. Yeah, you can ask That's another right, ma'am. other panel. Ma'am, Yes. thank you so Thank you. much for Yes. explaining the importance of language as a vital tool of communication. Yes, you're right that sign language does help in fostering cognitive, social and emotional development of the deaf people or hard of hearing people. When it comes to Indian Sign Language, because in our country we have people coming from diverse backgrounds, having different cultures, our learners have varied learning styles. How do you think that Indian Sign Language is significant in the lives of deaf individuals in terms of expressions and, as the title says, the road ahead? Yes. Yes, it's a very interesting question. Um, on a very positive note, we are at a stage, where we are talking about sign language. We are understanding what it is about. For many years, however, many of our deaf children have suffered because of the lack of accessibility, the lack of limited recognition of their language. And now we're in a platform where we're actually talking about pathways on how to expand sign language into our curriculum, into our teaching materials. Yes. So on that, I'm very happy because of NEP 2020. Yes, you're talking about the diverse group of signers from across the country. Yes, at higher level education, it's very important that sign language to need extensive study and research and documentation. Right. And so that we build more resources for our teachers, more resources for our students. So integrating Indian Sign Language into our curriculum, into our language policies, into our three language formula that we have. Incentives can be given to those schools also who adopt Indian Sign Language as optional courses also. These are the things, many things that we can do. So the diversity of signers that we have across the country right now, ISLRTC, NCERT, we are in progress of collaborating and working towards the standardization of Indian Sign Language. So diversity is in fact a very positive thing because it enriches the language, it expands the vocabulary of the language, and that needs to be documented, to be researched, into understanding what are these varieties and what levels of varieties do we have at the lexical level or at the phrase level. Do we have at the phonological level, which is the one of the structures of a language? So these varieties need to be extensively studied in order for us to understand and compile that what we call Indian Sign Language, an umbrella, a global term for taking in many of these varieties from across the country, and it will just make Indian Sign Language richer and more powerful that we can use in education. For example, a spoken language of a small community, if we take that small language as a standardized form, then it limits the ability to study, because that small language cannot cater to the educational needs, educational terms, glossaries, and this and that. But if we have extensive documentation from across the country, including these varieties, as NEP also talks about, respecting the local varieties as far as possible, and where we integrate these together. NEP also point that out very clearly. And the larger the vocabulary, the larger understanding of how sign language works, the sentences, the phrases that we document, how we can integrate this into educational materials. And materials is one of the important aspect which I need to stress on, in the sense that, Indian Sign Language being a visual manual language,
we need to create virtual libraries, Yes. linking materials as dictionaries across the country. You'll find extensive efforts on building database of Indian Sign Language. ISLRTC also has crossed more than 10,000 words, and there are more. NGOs also are working on it, and you'll see apps are coming. So these can be integrated in the virtual libraries. Right. Storybooks for young signers. It's very interesting. I've done a lot of work on this area where we create, in the context of multilingualism. I always emphasize that multilingualism, we need to understand the multimodal aspect of language, That's right. speech and sign language. So these should be integrated in a larger platform, not exclusively that Indian Sign Language should be solely exclusively sign language, but rather should be integrated into our e-content materials also, which NCERT also has been doing and still needs a lot of support from signers, from deaf communities across the country to build these materials, to include in these virtual libraries where we have sign videos, activities that children can be involved. True. So designing activities, collaborative efforts of CBSE, NCERT, ISLRTC, SCERTs, all these also are required to collaborate together, that we should design activities on a collaborative a platform where through the arts, through social projects, through sports, all of this can be integrated and collaborated. And an example from a recent program which I did on nurturing young minds on the 21st century learning skills. We had 300 children from across the northeastern context, and that also include all types of children. We have the deaf community children as well. We have the visually impaired children. We have all sorts of children, and you should see that how they work together, how they pick up the language from each other. The interaction, classroom interaction is very important. School interaction is very important. So in teacher training programs that we normally do, which is one of the major components of our work, is teacher training through SCERTs and diets. I remember when we had inclusive education launched in the country, we introduced inclusive session in every teacher training program. So why not do now? Right. We can also integrate sign language training programs, 1 or 2 sessions in whether it's a science subject or language or geography or history, Right, but creating awareness. Some kind of sessions should be built. Absolutely. To do training program. Yeah. And this I'm just talking about in-service program. But pre-service as well. True. Pre-service also we need to work on do these that. bits, Right. And also to create more awareness to community members. Yeah, can't agree more, ma'am. Yeah. Absolutely, Yes. ma'am, you're right, because when we talk about inclusivity and equity in education, we have to make sure that sign language or Indian Sign Language is integrated into our curriculum like different languages. It has to be a mandatory part of it, and of course everybody is striving around the world to make it one of the universal human rights. So why not start from home? And it is important to learn sign language so that not just teachers can impart valuable education and different skills to the people who are deaf, but also they can help them have a healthy exchange with their peers who are sitting in the same class, because these days we're talking about inclusive classroom settings also. And that is why you also mentioned about sports, you mentioned about arts, where we do teamwork, and there is scope for representing yourself also in a leadership role, and this is only possible when everybody is on the same page as far as language is concerned, because this is the first step through which communication and exchange of ideas happen. Now, I have, 2 achievers with me here in the studio. One of them is a karate player and another is a dancer. So, and also we have an instructor from ISLRTC. But before I go to the instructor, let me start with the achievers, because I'm sure what you discussed right now, that right from the beginning, how ISL plays an important role, these people can definitely elaborate on its significance, their challenges, because they have done it in real life, right? So हम start करेंगे मनु से.
So, Miss Manu, she is a karate player and she has qualified for Olympics also. It's a great achievement for our country. She is making everybody here in India proud. तो मैं मनु सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप हमेशा से कराटे में इंटरेस्टेड थे या फिर आपने दूसरों को देख के इसमें इंटरेस्ट डेवलप किया। आज आप कहाँ तक पहुँचे हैं? जी जी, मेरी फैमिली पूरी डेफ है और मेरा भाई हेयरिंग है। मैंने जब अपना स्कूल स्टार्ट किया था गुरुग्राम में, तो मैं उसके बाद शिफ्ट हो गई थी भोपाल। उसके बाद मेरे साथ ISL इंटरप्रेटर नहीं था, तो मुझे खुद ही समझना पड़ा था डेफ के साइंस में, लेकिन मैं एक्सपर्ट थी साइन लैंग्वेज में, तो मैंने खुद ही देखा और खुद ही अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी। बहुत सारे वहाँ पर डेफ लोग थे जिनके साथ मैंने कम्युनिकेशन की, मुझे हार्ड नहीं लगी, मैं समझ गई उनकी बातों को और इसलिए मेरे साथ ईजी था ये करना। जी, और हमारे साथ हमारी दूसरी एक अचीवर भी हैं, शी इज़ रमनदीप कौर। शी इज़ अ सेल्फ टॉट डांसर। तो रमनदीप, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपकी जर्नी के बारे में। जैसे कि मनु ने बताया कि उस टाइम पे कोई ISL इंटरप्रेटर नहीं था, उन्होंने खुद से सीखा। आप थोड़ा बताएं आपने कैसे डांस सीखा और कैसे आपने रिदम्स को पकड़ा? जी जी, मेरा नाम रमनदीप है और मेरा साइन नेम ये है। मैं राजस्थान से हूँ। जी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मैंने डांस स्टार्ट किया था, तो मैंने खुद ही मुझे डांस से सच में बहुत प्यार था और मैं चाहती थी कि मैं डांस करूं। जब मैं अपने स्कूल में थी तब भी मैं डांस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट लेती रहती थी जी। और मैं अपनी बोलती थी टीचर को कि मुझे ये करना है, तो टीचर ने मुझे सिखाया, टीचर ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ, मुझे मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो। और मैं उसके बाद मैंने अपने खुद ही डांस के रिदम्स को पकड़ा और फिर मैं उसके बाद पंजाब गई। मैं पंजाब में पार्टिसिपेट लिया और फिर मैंने किया। जी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे दोनों अचीवर्स ने जब शुरुआत करी तो उनको ISL के थ्रू सपोर्ट करने वाले टीचर्स, गाइड या मेंटर्स नहीं थे। उन्होंने खुद से ही चीज़ें सीखी और प्रैक्टिस करी। लेकिन आज हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं ISLRTC जैसे, जहाँ पर कि बच्चों को साइन लैंग्वेज पढ़ाई समझाई जाती है, वहाँ से इंटरप्रेटर्स भी निकल कर आते हैं और वहीं के इंस्ट्रक्टर हमारे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि ISLRTC की जर्नी को वो कैसे देखते हैं, इंडियन साइन लैंग्वेज की जर्नी कैसे शुरू हुई, आज प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और वो कहाँ जा रही है। सो विश्वजीत सर, प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताएं। मुझे विश्वजीत सर दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। मुझे साइन ही नहीं दिख रही। जी, तो मैं बाय बर्थ डेफ हूँ और मेरे मदर फादर भी डेफ हैं। मेरी पूरी फैमिली में 26 डेफ फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं बचपन से ही साइन लैंग्वेज करता आ रहा हूँ और साइन लैंग्वेज की स्टार्टिंग कब हुई, कहाँ से हुई? 2001 में मैंने साइन लैंग्वेज सीखनी शुरू की। तब से लेके अब तक 24 साल हो गए हैं मैं साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ और हम इस वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा एक डेफ कम्युनिटी का साइन लैंग्वेज का एक सेलिब्रेशन वीक है और हम इस वीक को अवेयर करते हैं। तो हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और साथ ही यूनाइटेड नेशन में मेंशन किया गया है 23 सितंबर 2025 इंटरनेशनल वीक ऑफ साइन लैंग्वेज। तो हर साल ये UN में, यूनाइटेड नेशन में ये वीक सेलिब्रेट किया जाता है और 22 सितंबर, एक दिन पहले, जो डेफ लोग हैं, जो डेफ लीड हैं, इन सब के साथ सेलिब्रेट किया जाता है 22 सितंबर में। और मुझे बहुत प्राउड फील है
कि हम डेफ लीडर्स एज ए रोल मॉडल आगे आ रहे हैं जी। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इस जर्नी की शुरुआत में तो काफ़ी चैलेंजेस रहे होंगे, आज आप क्या देखते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, किस तरीके से डेफ बच्चे ISL के माध्यम से और आगे बढ़ेंगे और सक्सेस स्टोरी सामने आएंगी? मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा अमेरिका का। 15 से 30 हज़ार इंटरप्रेटर्स अमेरिका में हैं। इसका मतलब एक इंटरप्रेटर के पास तकरीबन 33 डेफ लोग हैं, लेकिन इंडिया में एक इंटरप्रेटर के पास 10,000 डेफ लोग हैं। इसका मतलब ये है कि 10,000 डेफ लोगों के लिए एक इंटरप्रेटर, ये बहुत कम इंटरप्रेटर्स हैं। आने वाले टाइम में AI आ रहा है, तो वी डोंट नो AI इंटरप्रिटेशन आगे आए तो आई थिंक AI ही फ्यूचर है इंटरप्रिटेशन और डेफ कम्युनिटी का। जी, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। आप डेफ लोगों के साथ काम करते हैं, आप इंस्ट्रक्टर हैं, आपको जनरली क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं डेफ स्टूडेंट्स के साथ डील करते हुए? नाइस क्वेश्चन। बहुत सी चीज़ें हैं स्कूल के अंदर। ड्यूरिंग टीचिंग कुछ क्वालिफाइड होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन वाले होते हैं, कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने बचपन से ही बहुत बैरियर देखे हों या फिर इतनी अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड फील्ड से ना आए हों। तो बहुत इनोवेशंस वाले बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनको सबको एक ही बैरियर आता है, इंटरप्रेटर ना मिलना। इंक्लूसिविटी हम बताते हैं, लेकिन इंक्लूसिविटी का रियल मीनिंग सिर्फ इंटरप्रेटर हो ये नहीं है। स्कूल में अगर इंटरप्रेटर ना हो और साइन लैंग्वेज ना हो तो एक बच्चा जो सुन बोल नहीं सकता, हेयरिंग स्कूल में सीख ही नहीं सकता, है ना। और जिस स्कूल में साइन लैंग्वेज हो उसको रियल इंक्लूसिविटी बताते हैं। बहुत सारे बैरियर्स हैं डेली रूटीन में, हर एक चीज़ में बैरियर्स डेफ कम्युनिटी, डेफ स्टूडेंट्स फेस करते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है, स्पीच टू स्पीक, टेक्स्ट टू स्पीक, ये टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन हम बिलीव करते हैं आगे भी और टेक्नोलॉजी आए साइन लैंग्वेज के लेके। जी बिल्कुल, आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं, लेकिन अभी भी इंडियन साइन लैंग्वेज को हर फील्ड में इनकरेजमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन मनु से पूछना चाहूँगी क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, कराटे प्लेयर हैं। मनु, आप मुझे बताइए कैसे स्पोर्ट्स के थ्रू हम इंडियन साइन लैंग्वेज को इनकरेज कर सकते हैं और इससे क्या होगा, और भी बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आएंगे और अपनी कंट्री का नाम रोशन करेंगे। तो बाय बर्थ मैंने बहुत बैरियर फेस की हैं, बिकॉज हमारे पास ISL नहीं होती थी। तो जो टीचर्स था वो मुझे गेस्चर्स के साथ टेक्निक सिखाता था। लेकिन अब 2012 में मैंने क्विट कर दिया था, तो मैं गुड़गांव मूव ऑन हुई। गुड़गांव मूव ऑन करके मैंने जब कराटे क्लासेस ली, यहाँ भी कोई ISL इंटरप्रेटर नहीं था, मुझे बहुत दिक्कतें आई। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के कारण, अवेयरनेस के कारण शुरू हो गया है कराटे क्लासेस में इंटरप्रेटर्स आना। अब मेरा भाई मेरे साथ आता है जो मुझे टेक्निक सिखाता है, और अब मुझे लग रहा है कि अवेयरनेस के कारण जो हमारी कम्युनिटी और ग्रो कर सकती है कराटे और स्पोर्ट्स में। बिल्कुल, तो अब क्योंकि टेक्नोलॉजी भी है, इंटरप्रेटर्स भी हैं और साइन लैंग्वेज की हेल्प से कोई भी स्किल इम्पार्ट करना इजी हो गया है। तो ऐसे ही शायद डांसिंग में भी है, क्योंकि यहाँ पे रिदम्स को, बीट को पकड़कर डांस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन अगर सही रहेगा तभी आपके मूव्स ग्रेसफुल नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रमनदीप से पूछना चाहूँगी कि उन्होंने कैसे म्यूज़िक और बीट्स को पकड़ा और किस तरीके से डांस में ISL ने उनकी हेल्प करी। जी ओके, तो ISL ने मेरी हेल्प ऐसे की कि जब मैं डांस करती थी तो स्टेप्स होते हैं 1 2 3 अकॉर्डिंग टू विजुअलाइजेशन। तो मैं 1 2 3 के साथ जो रिदम होती है ना, उसकी बेस होती है। साइन लैंग्वेज तो चलो गानों में नहीं होती है, लेकिन हाँ, मैं उस बेस, उस रिदम को फील करके और स्टेप्स बना के डांस करती थी। और मेरा ये शुरू से ही एम रहा है कि मैं बाहर जाके और ट्रैवल करके डांस को एक्सप्लोर करूं। जी,
मेरा अभी क्वेश्चन मनु से भी है और रमनदीप से है, टर्न बाय टर्न वो आंसर कर सकते हैं। जब हमारे पास जहाँ पर विसल्स और स्पोकन कमांड्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए डेफ कम्युनिटी के पास ऑप्शंस रहते हैं विजुअल साइंस के, फ्लैग्स, लाइट्स, हैंड जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस। ये कितना मदद करते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में, चाहे वो डांस हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो। पहले मैं मनु से पूछना चाहूँगी। जी, तो जब मैं हेयरिंग लोगों के साथ compete करती हूँ तो उनके हैंड गेस्टर्स होते हैं स्टॉप, बिकॉज दे नो कि ये डेफ लोग हैं। और जब हम डेफ लोगों के साथ करते हैं तो उसके साथ बहुत इजीली डेफ एम्पायर होते हैं, तो डेफ जजेस होते हैं, तो वो इजीली हमें बता देते हैं। लेकिन जब हेयरिंग लोगों के साथ हमारा कंपटीशन हो रहा होता है तो वो बीच में आके हमारे सामने ड्यूरिंग मैच हमें बीच में ही इंटरप्ट करके साइन करते हैं कि हाँ अब रुक जाइए, काइंड ऑफ। जी, और रमनदीप आप बताओ। तो ड्यूरिंग डांस मैं याद रखती हूँ कि जब डांस करना है तो स्टार्ट कोई मुझे बता दे कि हाँ स्टार्ट हो गया, और जब सॉन्ग ख़त्म हो जाए तो मुझे एक बंदा चाहिए वो बता दे कि हाँ स्टॉप, फिनिश। तो उस अकॉर्डिंग मैं उसको मैच करती हूँ। जी, और जब हम आज हम डेफ कल्चर को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हियरिंग कम्युनिटी होती है उनके पास ISL की नॉलेज तो नहीं है, तो वो समझ नहीं पाती कि डेफ के साथ हेल्दी एक्सचेंज कैसे किया जाना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन विश्वजीत सर से पूछना चाहूँगी कि चाहे हमारे मेंटर्स हैं, कोचेस हैं, टीचर्स हैं, वो साइन लैंग्वेज कितना ज़रूरी है उनके लिए सीखना, ताकि वो डेफ लोगों के साथ बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके, और इंक्लूसिविटी की जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं वो चीज़ सर्व हो सके, उसका पर्पस। ओके, तो डेफ कम्युनिटी के बारे में अवेयरनेस दिखाना, रोल मॉडल्स शो करना, लाइक जब आप डेफ से मिल रहे हो सिर्फ उसके साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करना, देखते रहना, वो रिस्पेक्ट है। लाइक डेफ कम्युनिटी का ये व्यू है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप फेस टू फेस देख के बात करें, ठीक है। और जब आप नज़रें इधर उधर करके बात कर रहे हैं तो वो डिसरिस्पेक्टफुल है डेफ कम्युनिटी के लिए, बिकॉज डेफ कम्युनिटी के लिए आई कॉन्टैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आई कॉन्टैक्ट एक तरह से रिस्पेक्ट शो करता है। और सेकंड, जब हम खाना खा रहे होते हैं ना तो वो स्ट्रेट टेबल नहीं, हमें राउंड टेबल चाहिए, ताकि हम हर एक का फेस देख सकें और साइन लैंग्वेज में इजीली कम्युनिकेट कर सकें। अगर हम किसी को बुला रहे हैं तो उसे हेड पे टैप करके, फेस पे टैप करके नहीं, शोल्डर पे टैप करके या फिर दूर से वेव करके हम उसे बता सकते हैं। और अगर वो हमारे पर ध्यान नहीं दे रहा है तो लाइट टर्न ऑफ टर्न ऑन करके हम उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं कि हाँ मैं बात करना चाह रहा हूँ। बाकी बाय बर्थ मैंने देखा है कि बहुत सारे डेफ लोग हैं जो अकेले रहते हैं, और अकेले रहने के बाद उनके एजुकेशन बहुत पीछे रह जाता है। पहले ऐसा था, लेकिन अब अवेयरनेस हो रही है और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस भी अब ISL इंटरप्रेटर प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन को लेके। जी, और हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। आप खुद एक इंस्ट्रक्टर हैं विश्वजीत सर, तो आप मुझे बताइए कि ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं ये कितना हेल्प करती हैं ISL में इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करने में। साथ ही साथ जब हम अपने आसपास भी देखते हैं, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई इवेंट में जा रहा है, वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी से क्या बहुत हेल्प मिल पाती है डेफ कम्युनिटी को, या इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? तो आई थिंक मुझे 6 to 7 years पहले बहुत चेंज आया है बिकॉज ऑफ प्राइवेट कंपनीज, न्यूज़, साइन लैंग्वेज डे। तो अब लोग अवेयर होना शुरू हो गए हैं कुछ सालों से। ऐसे ही मेरे पेरेंट्स हैं, वो सुन बोल नहीं सकते हैं, वो डेफ हैं, उनको ना ही न्यूज़पेपर रीड करना आता है। मुझे रीड करना आता है, मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं उनको साइन लैंग्वेज के ज़रिए बताता रहता हूँ और उनको अवेयर करता रहता हूँ कि आजकल कम्युनिटी में, सोसाइटी में अवेयरनेस के बारे में बहुत मिल रहा है। आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उनको साइन लैंग्वेज के बारे में पता है, उनको न्यूज़ के बारे में पता है। कैसे? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। So this is the impact of technology in our society, not only the technology, along with that communication from Google, text to speak. तो ऐसी टेक्नोलॉजीज लाइक लाइव ट्रांसलेशन, राइट। तो जब कोई बात कर रहा है तो मेरे सामने वो टेक्स्ट पे आ जाता है, तो बहुत इजी है मेरे लिए समझना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में
वॉइस टू ISL हो, कि कोई बोल के बात करे और वो ISL में मुझे शो हो। तो हाँ, ये मेरी होप आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी से। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। डॉक्टर मेलिसा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हम ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। एज एन इंस्ट्रक्टर फॉर डेफ स्टूडेंट्स, विश्वजीत सर ने बताया कि कितने ऐसे हैंडी टूल्स आ गए हैं जो बहुत ईज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को ईजी बना रहे हैं। देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। सिंस यू हैव ऑल्सो वर्कड एक्सटेंसिवली इन दिस फील्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट NEP 2020 also, you also mentioned that we are translating all our NCERT books into ISL. But how do you think that by integrating technology into a routine teaching learning experience, we can make Indian Sign Language pretty easy and everybody can come on the same page? So what is the road ahead with the use of technology, and if there are any special tools that you would like to mention that we all can use, and that would be great. Yes, thank you. A very wonderful question. And yes, I've been working in this area for a long time. Like I said earlier, that we need extensive documentation of sign language so that we can build more tools and more apps. That is what needed. So let's just talk a little bit about the classroom situation. Why we are building, why we require such technology. There is a classroom where a maths teacher was teaching, and there were two deaf children in the classroom. Now, the teacher, although he has some basic communication skills in sign language, he is using that also while teaching, but it's very difficult and challenging for a teacher when he writes on the blackboard, especially formulas, maths. He started writing and then he'll turn to the deaf children and then finger spells the formula, whatever he says. So there's a lot of miscommunication there. So, but now with technology, in fact, from NERIE NCERT here in Shillong, we are working on a more advanced tool where, you know, we have an AI, it's an AI tool where whatever the teacher is teaching, it automatically translates speech to sign. So for a deaf child, having such app in the classroom will assist the child and also the teacher. Like Vishwajit had mentioned, we have a very few interpreters in the country. As of now, as per their website also, I've seen around 339 interpreters, and we have millions of deaf people in the country. And example, in Northeast, we have only 4 qualified sign language interpreters, whereas in one state we have, you know, more than 100 to 100 deaf children studying in school. Now, how can we cater to the needs of deaf children? When we look at from their linguistic point of view, their rights, and when we look at you know, implementing NEP 2020 mandate, where we use sign language as a medium of instruction as well, so it's very challenging when we have few qualified sign interpreters. So advanced app like that, and AI, using AI tool, where it translates text to sign, speech to sign, and sign to text as well as sign to speech. That is in process, which we are developing, which is working. It's already working, but right now it's in the process of testing in the field, in school classroom atmosphere, because we need to optimize such tools. So yes, translation helps, but these are, these are solutions, technological solutions that we are working towards. But we need, like I have to repeat this, that we need extensive database on sign language in the country for materials, for the tools, for the apps. Now, for children who understand English, there are many apps available, like Live Transcribe. When a teacher talks, it transcribes to English. So we need that for Hindi also. So many universities are working also towards such tools. And it hasn't come to the community because working with language with a few database is very challenging. So that extensive research, that documentation is a major thrust that we need to focus on. Because most of the time when I saw that child in, another situation, a child in a classroom where we place an interpreter, the teacher was telling a story and the interpreter was interpreting. And I could see that, when the teacher, after telling the story, she asks comprehension questions. Now,
deaf children have understood because there's an interpreter. But the teacher failed to also ask questions to those children who are sitting in the classroom. She couldn't understand them. But so and because they can, because of sign language, the language delay, many other issues. Right. So when they write in their answers, they may write in a sign language grammar, not English grammar, not Hindi grammar. So the teacher will say that this child didn't understand because she didn't understand sign language grammar. If she didn't understand that the children have understood. And when you ask question, when the interpreter asks question in sign language, children could understand. In fact, they were having a group discussion amongst themselves. This happened, the Superman came, and carried the girl, something like that they were discussing. And a lot of learning has taken place, but teacher fails to see it, that learning has taken place, discussion is going on, they're learning new words, they're picking up vocabularies, but because of the absence of an interpreter, even with the presence of interpreter, we still need to train and create awareness for the teacher. You talk about earlier in the talk, you had mentioned about inclusion. When we talk about inclusion, we have to look, language is not is simply a tool or an object. It is a part and parcel of an individual's identity also. So if a deaf child comes into the school, he needs to feel included. So the climate, the environment of the school also, he has to see the staff and teachers say, hello, hi, how are you, where are you from, what's your name? All these kind of things. Basic greetings is also needed to give a sense of belonging to a deaf child in the classroom. So in that way, because when it comes to children to children, whether deaf or hearing, they will pick up each other's language, they will pick up each other's language naturally. And it's amazing because a child's brain is equipped to acquire more languages as much as he or she is exposed to. So technology is one thing that we can solve many issues for the classroom teachers, because like we had mentioned, we have so many, the problem is that we don't have many sign language interpreters. Yes. And even if we have one interpreter in the school, children study in different levels in the classroom. So what happens is the interpreter cannot be present in every class, right? So that's missing out. So integrating this aspect into teacher education is important. How to manage classroom atmosphere in inclusive context. So when we talk about basic training for teachers on basic communications, greetings, simple words, simple phrases, all that is needed. We're talking about social inclusion. Once you have social inclusion, you will have cognitive inclusion as well. That's right. So these are the important things that we need to focus on as teachers, and especially in teacher education programs, where we still lack very much, the fact that we have a paper on inclusive education, but we don't have a section on, sign language also in teacher training. But rather, inclusive education is introducing the different terms of disabilities and a little bit of strategies how to help. But when it comes to language, for a deaf individual, if we are depriving a child to understand what he is learning in the classroom, we are depriving his or her capabilities. Absolutely. That they are capable to be part and parcel of Viksit Bharat. True. That is the mission, that is the goal. True. Inclusive education, the ethos of NEP 2020 talks about equity and inclusivity. So they are very much a part of it, and we are so fortunate that now we are sitting here talking about it. They are part and parcel of nation building. So technology, yes. Indian Sign Language we still need, and if Indian Sign Language is equated as any other language in 3-language formula, and in higher education studies, where ample research is needed to document this language, to learn more about different deaf communities, like Vishwajit talking about his family. So many of them are deaf in one. There are many situations like that. They have home signs, they have the local signs, they have the school signs. So those kind of things we need to work and study from pedagogical aspect, from linguistic aspect, from social aspect,
So intensive effort also we need to imprint make, this in higher level education, where a lot of research is still needed, a lot of work is needed. But yes, when we recognize sign language, Indian Sign Language, we're not just recognizing their language, we're recognizing them as a linguistic entity, a group, a community of their own, who are very much a part and parcel of the mainstream society. Yes. So yes, at this point right. I will stop. Ma'am, you're absolutely right, because we see that in most of our Indian schools, the teachers who are teaching deaf community, they themselves don't know sign language, because of which they are unable to explain the concepts nicely to the students, and this is limiting their educational capabilities and eventually their career opportunities also. Now, as you said, there's still a lot to explore, lot to learn. और यही मैं विश्वजीत सर आपसे पूछना चाहूँगी, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट एन इंस्ट्रक्टर एट ISLRTC, और अ वेल लर्नड पर्सन, और आपने भी कई तरीके के बैरियर्स को क्रॉस किया होगा. अगर हम साइन लैंग्वेज को पहचान दिलाना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू प्रमोट इट, तो जो इंटरनेशनली प्रैक्टिसेस की जाती हैं इस रिगार्ड में, वहाँ से हम क्या कुछ सीख सकते हैं? अभी ISL रिकॉग्निशन, राइट, तो मेरी फैमिली में थोड़ा डिफरेंस रहा है. मेरी फैमिली में ISL यूज़ की गई है, लेकिन गेस्चर्स, जैसे डॉक्टर मलीशा ने बोला कि हाँ वी हैव वेरिएशंस इन साइन लैंग्वेज, ऐसे ही इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस होता है. इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज ऐसे नहीं है कि सब सेम होता है, वो सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए होता है. इंडिया के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज है, तो उसमें कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हाँ, इंटरनेशनली कोई रूल कॉपी करना, वो आई डोंट थिंक सो. बट हाँ, वी सपोर्ट इंडियन साइन लैंग्वेज एंड वी मस्ट अवेयर अबाउट इंडियन साइन लैंग्वेज. राइट. तो हमारे अपने स्टैटिस्टिक्स हैं, और हमें साइन लैंग्वेज के साथ साथ वर्बल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ताकि हम क्लियरली डेवलप कर सकें. जी, तो आप मुझे ये बताइए, जो ISL को यूज़ करने वाले लोग हैं और जो इसकी एडवोकेसी करने वाले लोग हैं, वो कैसे साथ मिलकर काम कर सकते हैं ताकि इंक्लूसिविटी को और ज़्यादा हम प्रमोट कर सकें, एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट कर सकें? ओके, तो लाइक टेक्स्ट बुक्स हैं, जो कोई भी जो स्टेट वाइज टेक्स्ट बुक हैं, तो उसमें साइन लैंग्वेज अवेयरनेस चैप्टर होना बहुत ज़रूरी है. चाहे वो अल्फ़ाबेट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटे बच्चों के लिए फ़नी स्टोरीज़ ही क्यों ना हो, ताकि बचपन से ही एक बच्चा सीख सके कि डेफ के साथ बात कैसे करनी है, उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है. अभी तक मैंने किसी भी टेक्स्ट बुक में साइन लैंग्वेज के बारे में, साइन लैंग्वेज की अवेयरनेस के बारे में नहीं देखा है. तो मैं चाहता हूँ कि ऑल स्टेट्स, हर एक स्टेट में इंक्लूसिविटी की एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में साइन लैंग्वेज लाई जाए. राइट. और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि टेक्स्ट बुक्स में भी कैसे चैप्टर को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे हम और मोटिवेशनल स्टोरीज़ इंक्लूड करते हैं. हमारी कंट्री में इतने सारे कल्चर्स हैं, उनसे रिलेटेड हम फैक्ट्स इंक्लूड करते हैं ताकि उनको समझ सकें. ऐसे ही डेफ कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें भी हमें अपने टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड करनी चाहिए, और इस तरीके से साइन लैंग्वेज का प्रॉपर वे में इंटीग्रेशन भी हो पाएगा. अब हमारे पास समय बहुत कम है, तो मैं सबसे क्लोजिंग रिमार्क्स जानना चाहूँगी. डॉक्टर मेलिसा, लेट मी स्टार्ट विद यू. आई वांट टू आस्क यू दैट वी आर हैविंग दिस डिस्कशन, वी आर ऑब्जर्विंग दिस वीक एंड सेलिब्रेटिंग Indian Sign Language. What do you think more can be done? Like Vishwajit sir has said something very beautiful, include one chapter, of signs in the textbooks. What do you think we can do more so that even those people who are hearing can take it as a neurotypical thing, कि ये तो हमको सीखना ही है जैसे बाकी चीज़ें सीखनी है? Your tips, your quick tips for everybody out there who is watching this session. Okay, thank you so much. Yes, introducing sign language as a chapter in textbooks is a good initiative, which has been done also in the past. NCERT textbooks, they introduce a few concepts, using pictures and diagrams. Nowadays, we have with technology, we have QR codes which we can link to ISL videos. So because of technology, these things are much more possible, what Vishwajit mentioned.
But sometimes, we need to, why I stress on teacher training program, because the essence of sign language as a language is still very much lacking. So, when you talk about Indian Sign Language as a natural language, then why not introduce it as a subject of its own? Why not teach basic communication? Because sometimes in the name of inclusive education, it's like we adding a pinch of salt to your meal to make it tasty. True. It becomes like that. So that I have always been fighting for years. Let's not do that. Let's not do that. Take sign language as a language. Linguistically, it is well intact. It has a system. It has a grammar, right? It is equally equipped to function as any language, right? So why aren't we equating it in the context of multilingual, bilingual materials? Why are not we putting in that platform where we talk about sign language as a natural language? Then we have to ensure that we understand about what is this language about. That's right. Because human language is not limited to speech alone, but also to the Signs visual, and gestures. manual. Gestures is part and parcel of any language. That's right. So it has to have that its rights as a language as well in the curriculum. Yeah. To be studied. For example, if I'm teaching English, a multilingual strategy for teachers that we are teaching nowadays is that if you say twinkle twinkle little star, twinkle twinkle little star, all that you can integrate in your teaching as well. Bimodal perspective, bilingual perspective within your teaching. We encourage that, not simply, you say, okay, we're creating awareness. What is sign language? I feel that is not enough anymore. I think this is something that we, ma'am, used to do when we were kids. But as we grew older, we forgot to do the same. But I think we need to continue with this practice. Let's always do that, so that we also learn sign language, and in our gestures, those who are hard of hearing or deaf people, they can also feel incorporated in that setting, involved and included in that setting, right, ma'am? Yeah. So my own child, a lot of sign language and singing together, I find that her language ability is more advanced compared to other children. Yes. She has, the brain works, in such a way, in a child's brain, it works in a manner where they can quickly connect languages from one language to another. Absolutely. So I've seen the positive sides, and understanding concepts and terms with sign language is an added boost. Anybody. It makes the communication and the journey easier. Yes. Right. So that becomes a holistic aspect of how and what is language, what we understand what language is. Right. So that is, I feel that we should bring it as a language in its own right. True. True. Thank you. Thank you so much, ma'am, for those valuable inputs. और अब मैं मनु से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. मनु, आपको क्या लगता है कि इंडियन साइन लैंग्वेज को यूज़ करके कैसे एक आप एम्पावरमेंट ला सकते हो डेफ कम्युनिटी में, अगर स्पेशली वो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं तो मेरी यही होप है आने वाले टाइम में जब भी कराटे मैच होते हैं, कंपटीशन होते हैं, तो वहाँ ISL इंटरप्रेटर प्रोवाइड कराया जाए, एक्सेसिबिलिटी हमें प्रोवाइड कराई जाए, ताकि जो हेयरिंग लोग हैं वो तो अवेयर होंगे ही साइन लैंग्वेज को लेकर, और हमें भी एक्सेसिबिलिटी मिलेगी. अगर हमें एक्सेसिबिलिटी और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर ना मिला जाए तो हम किसी से बात ही नहीं कर सकते हैं, और जो अपडेट्स हैं वो नहीं ले सकते हैं. जी. रमनदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बता रहे थे कि आप खुद एक डांस टीचर बनना चाहते हैं, तो आप ये बताएं कि डांस टीचर बनके आप ऐसा क्या करेंगे इंडियन साइन लैंग्वेज यूज़ करके जो बच्चों को और इजी कर देगा डांस सीखने में, उनको और फ्लेक्सिबिलिटी देगा. जी, तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि हाँ, मैं खुद साइन लैंग्वेज में डांस सिखाऊँ, बच्चों को डांस सिखाऊँ, और आने वाले टाइम में हेयरिंग लोगों को भी डांस सिखाऊं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के जरिए. राइट. और
विश्वजीत सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी एज एन इंस्ट्रक्टर आप क्या देखते हैं कि और भी जो लोग इंस्ट्रक्टर्स बनना चाहते हैं, डेफ कम्युनिटी को साइन लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, उन्हें क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि वो एक सही रोल मॉडल साबित हो, और जो हमारे डेफ बच्चे हैं या डेफ कम्युनिटी हैं वो किस तरीके से इंडियन साइन लैंग्वेज सीखें कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए आगे बढ़ती रहें? तो जो स्टूडेंट्स आगे जाके डेफ टीचर बनना चाहते हैं, साइन लैंग्वेज डेफ टीचर, तो अभी कोशिश चल रही है, एक नई उम्मीद की किरण खुली है, राइट। अभी एक स्टार्ट हुआ है, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत जगह में अब ISL सिखाई जा रही है। तो मुझे किस चीज़ से इंस्पिरेशन मिलती है, एक स्कूल था जहाँ मैं अवेयरनेस प्रोग्राम में गया, IWD, तो वहाँ बहुत स्वीट से बच्चे थे। तो उनमें से एक छोटे बच्चे ने मुझे पूछा कि मैंने ISL टीचर बनना है। तो इन्होंने बोला सच्ची? तो वो बच्चे ने बोला कि ISL टीचर मेरे लिए एक तरह रोल मॉडल है, बिकॉज उन्हें लगता था कि कभी डेफ एक टीचर नहीं बन सकता है, लेकिन अब विश्वजीत सर उनके सामने है एज ए डेफ टीचर। तो हाँ, वो बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए भी और आने वाले टाइम में जो डेफ टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए भी। बिल्कुल आपने सही कहा, डेफ टीचर्स के लिए रोल मॉडल हैं, और साथ ही साथ इसमें करियर की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि जब आप किसी का आगे बढ़ाएंगे, किसी का करियर बनाएंगे, तो आप बहुतों को इंस्पिरेशन देंगे, और सही कॉन्सेप्ट समझा के, ISL का सही यूज़ बता के आप इंक्लूजन का प्रोसेस, एक्सेसिबिलिटी का प्रोसेस, इक्विटी का जो प्रोसेस है उसे भी कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। ये हमारी बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही, हमारा 5 डेज़ का ये ऑनलाइन इंटरेक्शन ऑन इंडियन साइन लैंग्वेज, जिसमें हमने इंटरनेशनल डेफ साइन लैंग्वेज वीक को एक तरीके से सेलिब्रेट किया। ये सेलिब्रेशंस अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रहेंगे। आज 5th डे हमने जब बात करी एक्सप्रेशन थ्रू ISL एंड रोड अहेड, तो हमने जाना कि किस तरीके से आप एज एन इंस्ट्रक्टर, एज एन अचीवर और एज ए कोलैबोरेटर साइन लैंग्वेज को प्रमोट करके आगे बढ़ा सकते हैं, और इसे हमारी सोसाइटी का, हमारे एनवायरनमेंट का एक इंटेग्रल पार्ट बना सकते हैं। मैं अपने सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद देना चाहूँगी, डॉक्टर मेलिसा, मिस्टर विश्वजीत, मिस मानू एंड मिस रमनदीप, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड कंट्रीब्यूशन टू द सेशन। और साथ ही साथ मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे सभी ISL इंटरप्रेटर्स का, सौरभ, भूमि, अनुष्का एंड आशीष, फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक माई एंटायर टीम, जिनकी वजह से हम ये सेशन आप तक लेकर आ सके। अब हम आपको कुछ क्विकली इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आने वाले प्रोग्राम्स की। हेयर इज़ द प्रोग्राम शेड्यूल, और अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे 2 बजे हमारा अगला सेशन, जो कि उर्दू पर होगा, और उसके ठीक थोड़ी देर बाद आप परिचर्चा प्रोग्राम भी दे सकते हैं। प्लीज़ वॉच रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, गिव योर फीडबैक, सजेशंस एंड डू पार्टिसिपेट। दिस इज़ मी हरप्रीत कौर टेकिंग लीव ऑफ यू एंड विल जॉइन यू सून। नमस्कार।